जी, Assalamualaikum everyone. It's Shoayb Khan and welcome to the live update of crypto affairs. It's 17th of January, 3:30 p.m. local time, and we're gonna be having discussion कि मार्केट की सिचुएशन क्या लग रही है, क्या मामलात हैं और आगे चल के जो है हमें मतलब जो भी नॉइस एक तरीके से आ रही है आपकी यहाँ पे ट्विटर स्पेस पे और एवरीबडी इज़ कैरिंग बुलिश और बेयरिश एंड व्हाट नॉट। सो इस मामले में कुछ बात करेंगे और आज जो है कुछ पीछे भी देख लेंगे कि पाइल अप जो है न्यूज़ क्या हो रही हैं और सारे उसके क्या मामलात हैं। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन द चार्ट्स फर्स्ट, राइट? So this is where we left it before at around our reacted order block कि हमारी जो एक ऑर्डर ब्लॉक की जो पूरी यहाँ पे सिचुएशन थी 21,473 से 21,086 तक, यहाँ पे हमने जो है लास्ट टाइम मतलब छोड़ा था बीटीसी को। और सो फार डेली के चार्ट पे आप ये देख सकते हैं कि कल इसने अंदर इसके क्लोज़ किया। नाउ आज भी जो है हम इसके थोड़ा सा जो है आउटसाइड मतलब ये कि इधर बेरिश जो है उसको यहाँ पे क्लोजर की तरफ जो है कम जा रहे हैं। एंड इफ़ यू लुक एट द 4 आवर चार्ट हेयर we are pretty much sideways or I don't use indicators on my analysis and all that kind of stuff। तो you can even check कि अगर आप देखना चाहेंगे जब प्राइस इस तरीके से जा रही है विद लो वॉल्यूम, दैट मीन्स कि आपके RSI या दूसरे जो वॉल्यूम के इंडिकेटर्स हैं उस पर मामला जो हैं वो बेयरिश ही चल रहे होंगे। तो देयर इज़ अ डाइवर्जेंस हैपनिंग ऑन द चार्ट ऑल्सो। व्हाट वी हैव टू लुक इज़ कल अगर हम स्टॉक मार्केट के उस पर हम देख लेते हैं तो मार्केट ने जैसे हमारी पीओआई के जो है आसपास ही मतलब ये है एक प्रीवियस इसका इम्बैलेंस जो है वो फिल हो गया था। एंड मार्केट इतनी कोई ख़ास बुलिश उसमें जो है वो हुई नहीं है। देयर इज़ स्टिल गैप, यहाँ पे क्लोज हुई, यहाँ पे ओपन हुई एंड देन वी आर सिटिंग एट द सेम लेवल जो उससे एक दिन पहले की जो 12 जनवरी की जो रेजिस्टेंस थी। तो आज फिर ये देखना है कि लाइक न्यूयॉर्क ओपन जो होता है वो किस तरीके से होता है, इसके क्या मामलात होते हैं। सो ये आज इसका इम्पैक्ट जो है क्या आता है। अच्छा, सेकेंडली एक डॉलर के अगर हम इस पे बात कर लेते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स पे, तो लास्ट टाइम 103 पे हम लोग लेवल को जो है आई आउट कर रहे थे, इट जस्ट गॉट बाउंस रिजेक्टेड। इसने इसको फ़िलहाल रीटेस्ट नहीं किया, सो आई एम गोना रिमूव इट फॉर अ वाइल। एंड यहाँ पे जो इसका मामला है वो एक हम देख लेते हैं कि इट्स गोना रिकवर, क्योंकि ये बिल्कुल इतना बेरिश मतलब ये कि डेली चार्ट पे होता हुआ जा रहा है कि इसने अब जो है यहाँ पे रिकवरी थोड़ी दिखानी पड़ेगी। एंड इवन इफ़ वी लुक एट द 1 आवर चार्ट वी कैन सी हेयर कि डॉलर इज़ गेनिंग सम स्ट्रेंथ हेयर। सो दैट मीन्स के आपका पैसा अगर स्टेबल्स में आ रहा है दैट मीन्स वो स्टॉक्स और वहाँ से जो है वो निकल रहा है और जो मार्केट है वो मोस्ट लाइकली इसके अगेंस्ट में जो है मतलब इन्वर्स जो है मूव करती है। सो इट्स गोना बी लाइक दैट। एंड जो रिकवरी एक होती हुई आ रही है, तो आज के दिन में एक स्पेशली जब न्यूयॉर्क ओपन होता है ये हमने देखना है कि उसका रिएक्शन क्या आता है और स्पेसिफिकली न्यूयॉर्क क्लोजर का जो इम्पैक्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक होगा। अच्छा, लोग एक बात जो है डिस्कस जो कर रहे हैं काफ़ी है कि हम लोग यहाँ पे आ गए, फलाना इंडिकेटर ने ब्लिंक कर दिया, बुलेट साइन एंड ऑल दैट। उसको एक चीज़ ये कि हम एड्रेस एक तरीके से कर लेते हैं कि हम डेली के चार्ट पे जाके आई एम जस्ट एड्रेसिंग व्हाट दे आर सेइंग, आई एम नॉट एड्रेसिंग एनीथिंग एल्स। सो व्हाट दे आर सेइंग कि हम फलाना इंडिकेटर जो है आपका बुलिश दिखा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, उस पर वो चक्कर देखें। इंडिकेटर जो होते हैं वो ज़्यादातर मोमेंटम पे और वॉलीटिलिटी की बुनियाद पे जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। दैट मीन्स के इफ़ दे आर ब्लिंकिंग समथिंग इट्स ऑलरेडी टू लेट टू बाय। आपका इंडिकेटर इस टाइम पे क्यों ब्लिंक नहीं कर रहा था अगर वो इतना ही लैगिंग नहीं है और एक अच्छा है। सो व्हाट्स हैपनिंग हेयर के इवन विद द 4 आवर चार्ट, डेली तो खैर सबको ही समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैं बिल्कुल अब प्लेन चार्ट पे बात कर लेता हूँ कि इवन इफ़ यू लुक हेयर, ये मैंने मेंटोरिंग लॉन्च में जो है प्राइवेट उस पर बताई थी ये सारी चीज़ इसको कि when we look at the bull side or the bearish side of the market, we always see the move like this. Market goes up, it retraces a bit, then it goes up, then retraces a bit, and then goes like this. Similarly, in a bearish case, it goes with the same momentum, or even if it drops, then it recovers a bit and then move like that. So
This is how the market moves. But if you consider here, even in the 4 hourly chart, there is no retracements here. Even with such a small time frame, not even looking at the perspective for daily chart, you can see here the market went up, stay sideways, then went up, going sideways, and then aggressive move up, and then moving sideways and technically going up while the volume is bleeding out. $36 billion of worth since like literally moved away. I think I'm gonna show you uh, the total cap of the crypto market. You can see here on a daily, we went as high as $964 billion, and to the very next day, almost $46 billion, swept away. So this is not technically a sign of a start of a good bull market, because the retracements are due. And if I'm gonna keep the things very much simple, to only one confluence, if that's the bottom and that's my top, well, the situation of coming back to 18,000 levels is still aligning, and we're gonna be coming back down one way or another. So I'm not the guy who gonna tell you if this gonna come up, if that news gonna pop up, it will gonna come down. I'm just looking at the charts, I'm just showing you what just happened and what is most likely a scenario going to be unfold when it comes to the Bitcoin PA. So and secondly, if you look at the Bitcoin CME futures, you can see there's a huge gap already present, and we didn't even tapped into it yet. So of course it will gonna come back to the early to 20,000s. And the volume there, the volume that we talked about earlier here, the liquidity buildup of 22,222, it's still there, and somebody increased it a bit from 194 BTC to 374 Bitcoin as for now. But the amount of orders are also increasing at 20,000, literally the exact $20,000 value, and it's increased from 1100 Bitcoin to 1300 Bitcoin for now. I'm not gonna be saying that it's going to have a hard bounce from here, but there's a chance there's a huge buildup here, which is going to be a spoof order. Like, all right, the market is gonna go up and they're gonna trap the shorts moving up and then trapping the long before ultimately coming back down, completing the market structure break or a MSB, even on a daily, first on a 4 hour chart and then on a daily. But the situation is, if it's gonna happen, it's gonna happen soon, and it's gonna be happening in this week. And the sooner it will going to dust it off, the better it will be for the both sides. So the volume is drying up and the liquidity is pretty much building up on the both sides, but we are seeing the confluence is way more than on the downside as for the upside. So for the last trap, they might wick it up to 22,000, and then before slowly coming back down, making a really ugly red candle on a daily and a 4 hour D sooner or later. So that's what's happening with the Bitcoin itself. So that's a major adding up in my last update. Everything is still there, nothing new is popping up. And there's also a huge harmonic that you all can see, the bearish harmonic here happening on a daily chart, this one, and it will gonna come back. So again, this is the another added confluence of 18,000, mid 18,000 levels. So all good to see that these impulsive move will be fading away anytime soon. Now the thing is that the people who are saying, all right, we are entering in a bull market and all that kind of stuff, well, we already observe the failed attempt back in August here, while the Bitcoin was raising a channel and we tapped towards that psych level of 25k, and then we dropped really bad from this point. So this was not technically a bull trap, but it was just the volume drying out, and BTC just failed to hold up to that mark. You can say the psychological level, but again, you can call it a bull trap, you can call this one a bull trap. This is not a bull trap, it was just again
BTC completing the 0.5 and coming back down. So that can be said, it can be a like literally a dead cat bounce or whatever. So now we completed this entire range. The lows are still untapped. And to be bullish, by the way, just let's have a look on what if it's a start of a bull run. So for the bullish scenario, we have to see uh, what's on the chart here. So we have the high at 25,207 and we have a low of uh, here it is 15,473. So we are literally a slightly above our mid-range. If I'm gonna draw a top to bottom here, we are slightly above. So that makes 20,000 our mid-range here. So to go really bullish from this range, well, BTC will have to retap this, move up, and then stabilize above this point at $25,000. And then once it's going to grab the liquidity, then it will gonna go up. This is the only bullish scenario that we can see without any bias or anything. So let's see if you're agreeing that that's a healthy move. Well, you're gonna also be agreeing over the fact that it's gonna go up like this at $25,000, stabilize, and then move towards a 30K. But I'm just gonna water down your hopes and dream right here while I look at the 3-month chart or a monthly chart. Again, this is the strongest confluence of anything that we have discussed so far, that there's no shadow in this candle. Even with the yearly chart, of course the monthly, quarterly, and 6-month and yearly chart is all in one until we move in time and separates it. So the yearly candle itself has no shadow. So those who are working in fractals and those who tends to lean towards the historical data more, they're gonna come back and jump around like, holy shit, it just happened back in a day, like here on 1st January 2023. Well, the situation was totally different on 2023. The first thing is that there's the bearish engulfing candle for the first time in the history of Bitcoin since the start of 1st January 2010 to this year. So we are observing the bearish engulfing first time. And secondly, the adoption was really to the ground. The volume was really to the ground back in a day at 2013. So you can't really compare this candle to this one when it comes to the lows. BTC was sitting at $45 and now it's sitting at $21,000. So there's a huge difference, both with the scalability of it and when we tend to understand how the scarcity is unfolding and how many bitcoins are already mined and being lost and not in control of any whales, or you can say the market makers. So if you try to understand this stuff, then you're going to be seeing, all right, what I mean by this. So this is what's happening. And even if we aim for like ultra mega 4K bull run, well, how far you can go even if you consider the yearly candle? Well, 27,741. Does it ring a bell to you? Well, just kidding. That's the huge resistance, and we'll be needing like a couple of $100 to reach there. So that's all about it. And I don't think we are bullish yet until we fulfill the demands of a PA, which is already unfolding, and we'll literally sweeping the liquidity from below. So I'm not a guy who's tend to lean towards the bias of being bullish or bearish. I'm just a guy who work on a rationality and try to see what's happening on the charts organically and without any bias. So that's all about it. And if you have any queries, please ask me, and we'll gonna wind up this live soon. So yeah, let's get it started. I think I've already explained briefly in English, and I decided to do it in Urdu, but here we are, because the last video was in Urdu, so this one is winding that analysis and summarizing it in English. So now we are even.
Please tell me about Q&T and near also. All right, let's have a look on near already. If you guys remember, we have this price action gap back in a day of 15 November. All right, so I explained this. You can go back and check the live video uh, to this date around 15th or 17th November. I explained this why it's happening and how it will gonna be, fulfilling sooner or later in PA. Well, we just completed that price action gap and we are literally sitting above it. But if you look at this 4 hour chart here, you can see how choppy we are. और उर्दू में इसको क्या कहते हैं कि एक तरीके से मैनिपुलेशन जो सेलिंग साइड पे हो रही है आपकी। मैनिपुलेशन वो नहीं कि जो समझ नहीं आया तो वो मैनिपुलेशन बोल दिया। मैनिपुलेशन वो कि एक प्रॉपर एक ऑर्डर जहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पे सेलिंग आपको ऑपरेशन मिलना चाहिए, वहाँ होने के बजाय आपको विक्स का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। एक कैंडल यहाँ क्लोज होती है, नेक्स्ट उसके बराबर बन जाती है, देन दोबारा नीचे गिरती है, दूसरी उसके बराबर बन जाती है। सो दिस इज़ समथिंग रियली चॉपी गोइंग ऑन। एक बात याद रखिएगा नियर को लेके कि नियर स्टिल अभी जो कॉइन है वो एक तरीके से स्ट्रगल कर रहा है कि रिटेलर उसको एक्सेप्ट कर ले। मैं फंडामेंटल्स वगैरह या सेंटिमेंट्स वगैरह में नहीं जाता, बट जो चार्ट्स वो दिखा रहे थे, जो सेलिंग प्रेशर था, ये उस कॉइन के जैसा ही था। जैसे वो एक अभी जो लास्ट टाइम एक कॉइन नहीं आया था, आई थिंक दैट वाज APT और समथिंग के, जिसको वो शूज़ का उसमें था कि जब आप रनिंग कर रहे हो, कुछ हो रहे हो, तो वो आपको जो है वो टोकन्स एज़ पर उस पर जो मिल रहे थे गेमिंग टोकन्स वगैरह के हवाले से। तो इसका PA जो था ना सिमिलरली उस तरीके का दिख रहा था। सो वो एक तरीके से जो आपको एक्सेप्टेंस थी वो थोड़ी सी जो है डिविएटेड थी जो नॉर्मली होनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। अच्छा, Q&T USDT। Q&T के लास्ट एनालिसिस में हमारे पास 129 की रेजिस्टेंस थी। हम यहाँ से ब्रीच करके गए, वापस नीचे आए। इसके ऊपर जो है हमने रीटेस्ट करने के बाद एक इस कैंडल ने इसको ब्रीच किया एंड नाउ इज सिटिंग अबव इट। और इसमें भी बिटकॉइन जैसा ही सेम आपका मामला है कि वी आर मेकिंग अ ह्यूज bearish harmonic here. If you consider this and this wick and this bottom again and this wick, so that shows कि इस हार्मोनिक के कॉन्फ्लुएंस पे आपने दोबारा 118 पे जो है वापस आना है, राइट। यू कैन सी द स्क्रीन, राइट? डू लेट मी नो। ईथर में आपका जो रेजिस्टेंस अभी स्टिल जो मेजर रेजिस्टेंस के लेवल है वो 1700 पर ही है, ठीक है। तो अगर BTC 22 के करीब जाता है तो ईथर में डोमिनेंस के इफेक्ट में जो है ना वो विक्स वगैरह विशेष किस्म की पड़ सकती हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सेफ जो है ना इसको मामले को रखिएगा। अच्छा, ईथर में अगेन इसका जो PA है वो डेली पे भी और 4 आवर पे भी जो है PTC से बहुत ज़्यादा चॉपी है। चॉपी मीन्स के एक तरीके से जो बुलिश इसने इम्पल्स लिए वो बहुत ज़्यादा जो है उससे भी ख़तरनाक है। तो दैट्स हाउ इट इज़ इसके उसमें। अच्छा, can you please explain if BTC tap 22,200 and then comes down to which level so we can say it's doing MSB and from which it can do a bearish retest up again? अच्छा, मैं बता देता हूँ। ईथर में पहले हम देख लेते हैं। ईथर में जो हमारी पहली जो सपोर्ट होगी वो होगी 1354 की, ठीक है। ये वाली 1281 वाली मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी टेस्ट और डिप्लीट जो है हो चुकी है। सो आई एम रिमूविंग इट, आई एम गोना मेक इट दी करंट सपोर्ट एट 1353 और रेजिस्टेंस जो है लाइक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन ये हमारे पास 70s के लेवल पर ही है, ठीक है जी। चलें, अच्छा उसके बाद एटम देख लेते हैं। एटम में हमारे पास एटम अभी जो है इम्बैलेंस आपका पूरा कर रहा है, ये वाला कर चुका है बल्कि अच्छी जो है इसने एक वो कर ली करेक्शन। ये आपके पास इम्बैलेंस था एक, ठीक है। तो ये इसने ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे फिल कर लिया इम्बैलेंस को अपने, राइट। जो इम्बैलेंस इसने डेली पे बनाया था ऑन 8th of November।
तो ये आपका पूरा हो चुका है. नाउ इट्स ड्यू फॉर करेक्शन. तो ए के एम एस बी यहाँ पे कर ले, बेयरिश रीटेस्ट अपना कर ले. इनगल्फिंग इसमें बन चुकी हैं होपफुली. तो वंस इट कम्स डाउन तो ये अपने प्रीवियस ई क्यू हाइस की तरफ आएगा विच इज़ एट 10.450. ठीक है, ये आपके प्रीवियस ई क्यू हाइज हैं. ठीक है जी, ये आपके प्रीवियस ई क्यू हाइज हैं. अच्छा, वेट वेट मेरे पास, हाँ ये रहा. वेट आपकी प्रीवियस जो करंट सपोर्ट थी उसको टेस्ट कर रहा है. हम लोग यहाँ से टच हुए थे 8 नवंबर को. देन वी बाउंस्ड ऑन दिस डे. देन हमने अगले दिन इसको ब्रीच किया, वापस आया, रीटेस्ट किया, एंड देन उसके बाद हम नीचे चलते हुए जा रहे थे. तो ये आपकी जो करंट सपोर्ट थी वो फ्लिप हो गई थी करंट रेजिस्टेंस में. तो वी आर टेक्निकली टेस्टिंग दिस राइट नाउ. ठीक है, और उसके बाद वी आर, अगर इसके ऊपर हम स्टेबलाइज होते हैं तो फिर हम डेवलपिंग EQ हाइस की तरफ जो प्रीवियस थी उसकी तरफ जाएंगे. बल्कि डेवलपिंग EQ हाइस भी हटा दें आप, करंट रेजिस्टेंस जो प्रीवियस आपकी थी वो 2434 पे थी. लेकिन इसने इस पोजीशन पे जाने से पहले भी जो है यहाँ पे इसको रीटेस्ट करना है विच इज़ एट 1964. ठीक है जी. अच्छा, BTC में मैं एक MSB की हम एक चीज़ जो है वो क्लियर कर लें. वो एक ज़रूरी है, लोग उसमें थोड़ा देख रहे हैं, तो अभी के हिसाब से हम एक वो मामला देख लेते हैं. देखें 4 आवर के चार्ट में ठीक है, 4 आवर के चार्ट में आपका जो PA है ये पूरा सेलिंग प्रेशर भी दिखा रहा है, बाइंग प्रेशर भी यहाँ से दिखा रहा है. आपका फुल PA चॉपी हो चुका है. अब MSB की अगर कंसिड्रेशन आप देखते हो तो वो टेक्निकली आप यहाँ देखोगे इस जोन में. ठीक है, ये वाली प्रीवियस 4 आवर जो कि चॉपीनेस से पहले, ये तो आपकी इम्पल्सिव मूव थी ना 5 बजे वाली जो हुई है जिसने शॉर्ट्स उड़ाए, उससे पहले वाली का आप टॉप देख लो. ठीक है, और अभी वाले इस पूरी रेंज का जो है ना बॉटम देख लो, राइट, विच इज़ एट 20257 एंड ऑलमोस्ट 20,000 ही है. तो ये $250 की जो रेंज है ना आपकी, इसको मैं एक ट्राइंगल, वो सॉरी रेक्टेंगल बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये पता लग जाए. रीटेस्टिंग कर लेते हैं इसका नाम. ठीक है, इसका नाम हो गया रीटेस्टिंग जोन. चलो जी, नज़र ही नहीं आ रहा वो. एक सेकंड में इसकी स्टाइल चेंज कर दूँ थोड़ी. यस, ठीक है जी, ये आपका रीटेस्टिंग जोन जो है. तो ये सिंपल है 4 आवर के. इसमें यहाँ पे आपको MSB दिखेगा कि अगर हम इसको, बेशक आगे कुछ भी हो रहा हो, यहाँ पे जब हम नीचे की तरफ आते हैं इसको रीटेस्ट करने के बाद जब यहाँ से रिजेक्शन लेंगे तो ये आपका MSB होगा टेक्निकली इस PA पे जो अभी चल रहा है. ठीक है, तो दैट्स अराउंड 20,000, 250 टू 20,000. ये $250 का जो पूरा बैंड है. ठीक है जी, समझ आ गया. अच्छा, सर आप माउस कौन सा यूज़ करते हैं? फयाज साहब, मैं ये A4 टैग का है, F स्टाइलर समथिंग. ये एक पूरा सेट था, बट आई एम नॉट यूजिंग दैट कीबोर्ड बिकॉज मुझे एक नम पैड यूज़ करने की आदत है. उसमें जो है वो नम पैड नहीं था. तो ये वाला माउस और वो कीबोर्ड जो थे वो साइलेंट वाली कोई फ़ीचर उसमें थी कि उसमें क्लिक्स की जो है वो आवाज़ नहीं होती. तो ना कीबोर्ड पे जो बटन जो हम यूज़ कर रहे होते हैं उसकी जो है वो क्लिकिंग या क्लैकिंग साउंड नहीं होते. तो आई रियली लाइक इट, बट आई एम रियली यूजिंग दिस वन सिंस अ वाइल. ये भी A4 टाइप की है लेकिन ये पुराना मॉडल है. लेकिन इस पर जो एक तरीके से हाथ सेट हो जाता है, नंबर आप यूज़ कर रहे होते हैं आवर्टीज़ या TF को चेंज करने के लिए सारे वो, या गेमिंग वगैरह के लिए, तो उसके हिसाब से इट्स रियली नाइस. तो आई एम यूजिंग बोथ. A4 टैग ये थोड़ा नया मॉडल का है तो, और ये पुराने मॉडल का है. ठीक है जी. अच्छा जी, और किसी का कोई सवाल प्लीज़. Kevin Chandra is asking, out of context, sir, just wondering what's the weather like in Pakistan? We always see you wearing sweaters and jackets. Actually, office I'm sitting here is really high up in the number of floors, so that's why close to the sea and all that. So you can see me wearing this, and even I'm kind of a guy who really, put my air conditioning on 16 or 17 degree, but weather is really, it's
currently we are observing like the sharpest hit of the winter at this point. The temperature is dropping at 7 degree 6 degree for us. For the ones who lives on the equator is really low for us, so that's why you are seeing me wearing hoodies and all that. So yeah, it is what it is. uh, AI coins बताते हैं, स्पेशली एफ ई टी। ए आई कोइंस पे अभी नज़र रखें, एफ ई टी ओ जी आर टी पे, लेकिन ये थोड़ा सा जब हम नीचे करेक्शन कर लें फिर बुल रन से पहले जो है हम उसको अक्यूमुलेट करेंगे, तो उसकी रेंज जो है अभी देखेंगे। अभी इसमें एनालिसिस करना वो इस रेंज के एनालिसिस के उसमें है, तो इट माइट डिविएट यू, तो थोड़ा अभी इसको रहने दें। अभी जो डिटैच जोन है, इट कैन ऑल्सो वर्क एज अ सपोर्ट ब्रूटैलिटी। Yes, of course it's gonna work as a support, because even if you look at the PA or even if you look at the order book, so the order book is showing 1.3k, like 1300 bitcoins order at the 20,000 level. So yes, it will going to be uh, like acting as a support even if the half of the orders turn out to be a spoof one. So yes, we can see a bounce from there, a minor one you can say. All right. Bro, Ether short entry is 1420. Yes, your entry is pretty much close, but keep the liquidity safe. Ether will be very vicious once BTC start to do its thing late sooner or later. So you have to keep the liquidity very safe. Or if you are using the isolated portfolio, so keep manage the risk accordingly. I would say keep the liquidity above 20,000 or 2,000. OP USDT. All right, I'm gonna analyze it. I think we did last time the OP analysis. So here it is. The current resistance was at 1.419. We rejected from it exactly from there, and then we bounced from it, retesting it. So this current resistance will be turn out to be a current support now, and we tested this order block. Yes, we actually did. So I'm also gonna remove it, and OP is facing the rejection of this point here. Well, I'm gonna check it on daily. Yes, hopefully if you're not shorting it, please, if you are in short, make sure to book your profits at this current support. Hopefully it will gonna retest it. The resistance above is at 1.996 or $2, right? RLC. All right, I'm gonna analyze RLC. Why this light is turned off? Actually, it's really a bad thing to, if the light is pushing from the one side and the other one is off, it's really hurt the eyes. So RLC USDT. Okay, here we are with the RLC. The HTF POI is tested at 1.059 and the current support is at 0.996. So current support is still valid, and we are seeing the vicious kind of a pressure here. So let's wait for it, and we might see coming back to 1.435. All right, so let's wait for it. So I think that's all about it. I hope everything is understood and everything is pretty much explained. So keep your liquidity safe. Do not jump in without confirmation, and look for like the closure. And I'll be updating when the things turn bearish and whatsoever. So I'll be updating on the Discord, and if you are not in mentoring launch, again you are missing out. So please, the link is in the description below on this video, and I'm gonna wind this up. And if somebody is having the problem understanding the market, do share this video, and hopefully they're gonna be getting some considerable information out of it. So thank you so much. Take care of yourself, and I'll be seeing you guys, and yeah,